Yes, we ready? Start. It is undoubtedly true that in case of East End dwellings supra, their lordships were pleaded to observe as under stop. If you are bidden to treat an imaginary state of affairs as real, you must surely, unless prohibited from doing so, also imagine as real the consequences and incidents which, if the putative state of affairs had in fact existed, must inevitably have flowed from or accompanied it. Stop. The statute says that you must imagine a certain state of affairs. It does not say that having done so, you must cause or permit your imagination to bogle when it comes to the inevitable corollaries of the state of affairs. Stop. This principle has been recognized in various decisions by the apex court as well as this court. Stop. However, the petitioners in these cases can derive no advantage from this decision in view of the fact that the Parliament has introduced the fiction for a limited purpose. Stop. It is within the parameters laid down by the Parliament that the principle can be applied. Stop. Not beyond that. Mr. Suryakant had referred to the decision in Verumal's case supra. Stop. Counsel for the petitioners was at pains to point out that the decision does not embody the correct statement of law. Stop. In view of our above conclusion, we do not find any merit in this contention raised by Mr. Serene. Stop. In fairness to the Advocate General, it may be mentioned that he had referred to the decisions of various courts which in Consolidated Coffee Limited versus Coffee Board Bangalore, Nikka Trading Corporation of India Limited versus State of Andhra Pradesh, Bismillah and Company versus State of Andhra Pradesh, Muhammad Ishaq and Sons versus Commissioner of Commercial Taxes in Karnataka, Bangalore and Sovereign Spices versus State of Kerala. Stop. However, each case separately. Stop. Mr. Serene laid great emphasis on the fact that the purpose of the legislature was to promote export. Stop. Thus, it had introduced a fiction so that our prices were competitive with other countries. Stop. Consequently, we should not give a restricted meaning to the provision. Stop. It is undoubtedly true that the nation needs foreign exchange. Stop. Thus, it takes steps to encourage and promote exports. Stop. However, it is equally relevant to remember that even the revenues of the state are important. Stop. One cannot sacrifice the state's interests
totally stop, keeping in view the needs to strike a balance. The Parliament appears to have introduced a limited fiction stop. It has treated rice and paddy as one commodity for a limited purpose stop. By this amendment, it has enabled the millers who are direct exporters to avoid payment of tax on the purchase of paddy stock. However, this benefit has not been made available to those millers who sell to an exporter and do not export directly. Stop. The Parliament is the best judge of the interest of the people. Stop. It enacts statutes on the basis of needs made manifest by experience. Stop. The provision introducing limited fiction is within the constitutional parameters. Stop. It strikes a reasonable balance. Stop. We are unable to extend this fiction beyond what the express words of the statute provision. Stop. Hi student, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शन आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है। आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है, ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट किए हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।